Hi everyone, welcome to Organizing Chapter 5 of Business Studies in Class 12. So, today again I have taken Chapter 5 Organizing, and today I will discuss about delegation and its various elements. So, let's begin the session with the delegation of authority. Students, first of all, we'll discuss about the meaning of delegation. Delegation is a process of sharing work and authority between a manager and his subordinates. When the manager shares some of his authority with his subordinates, that is known as delegation. When the responsibility and authority is shared with others, it is known as delegation. It is a process which enables a person to assign a work to others and also delegate them with adequate authority to do it. So it refers to the downward transfer of authority from a superior to a subordinate, not from subordinate to superior. It means the downward transfer of authority from a superior to a subordinate to enable subordinates to perform their responsibilities in a very effective manner. It is required because it enables the efficient functioning of an organization. If we want efficient functioning of an organization, we have to delegate some of our authority to our सबॉर्डिनेट्स. हमें अपने जूनियर्स के साथ हमारी अथॉरिटी शेयर करनी पड़ती है. इट ऑल्सो अनेबल्स मैनेजर्स टू यूज़ देयर टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़. मैनेजर्स को कोई और काम जिसमें जो ज़्यादा ज़रूरी है वो उस पर तभी टाइम दे पाएंगे जब वो अपनी कुछ अथॉरिटी, अपना कुछ काम जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बांटेंगे. इट ऑल्सो अलाउज मैनेजर्स टू एक्सटेंड देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन. अब क्योंकि उन्होंने अपना वर्कलोड बांट लिया है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, तो उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो और आगे बढ़ जाएगा. और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पे जिन पे वो टाइम नहीं डिवोट कर पा रहे थे, नाउ दे हैव टाइम टू डिवोट. इट ऑल्सो प्रोवाइड सबॉर्डिनेट्स को भी इससे क्या मिलता है, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको एक स्टेटस मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, एंड अपॉर्चुनिटी. दे ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव. सबॉर्डिनेट्स को भी इसमें रिकॉग्निशन मिलता है, उनको एक स्टेटस मिलता है, उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डेवलप देमसेल्व्स. खुद को डेवलप करने का एक उनको मौका दिया गया है. सो इट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी देना दैट यू शुड ऑपरेट विद इन द, बट देयर शुड बी सम लिमिटेशंस. Granting of authority to subordinates to operate but within prescribed limits. There are certain limitations also for the subordinates which they have to follow while having the power. Now these are the three elements of delegation. We can also name them as components. First is responsibility, then authority, and then accountability. So these are the three elements of delegation. Now let's discuss about these three elements. We can also identify these elements in the help of this triangle, like authority, a formal legitimate right of a manager to make decisions, issue orders, and allocate the resources. Then responsibility, perform on assigned task, जो काम दिया गया है वो काम करना है. And accountability means justify outcomes to those above in the chain of command. उसका रिजल्ट क्या रहा है उसके बारे में आंसर देना जो हमसे ऊपर है. सबॉर्डिनेट्स हैव टू आंसर ऑल्सो. We can also understand these elements of delegation in this manner, like authority भी दे दी, responsibility भी दे दी. Management has given the authority, has given the responsibility to employees. Now employees, they have to accountability to management, they have to answer. उनको आंसर देना है, किसको? मैनेजमेंट को देना है. So I hope this picture is clearly states the this meaning of elements of delegation. Components के बारे में I think this picture is very clear about the components. Now let's discuss these components. First is authority. Authority means the power of taking decisions in order to guide the activity of others. Authority is that power which influences the conduct of others. Authority means to take the decisions. Responsibility means the obligation of a subordinate to perform
to properly perform the assigned duty. Responsibility means the obligation which the orders, the subordinates, they have to obey the orders given by the superior. And accountability means when a superior assigns some work to subordinate, he is answerable to his superior for its success or failure. चाहे नुकसान हो गया, चाहे वो फेलियर हो गया, चाहे वो सक्सेस हो गया, the subordinates, they have to answer to the superior. Now let's discuss about the importance of delegation. These are certain points of importance of delegation. Let's discuss one by one. First is effective management. Why effective management? Because delegation relieve the managers from heavy workload. जितना ज़्यादा workload था managers के ऊपर, उसको relief मिल गया and enable them to functions more efficiently. अब क्योंकि वो अपना काम और अच्छे से कर रहे हैं, मैनेजर को बहुत टाइम मिल गया, फ्रीडम मिल गई अपने डेली रूटीन जॉब से, उससे फ्रीडम मिल गई और अपॉर्चुनिटी मिली टू फोकस ऑन हाई इश्यूज, ऑन इश्यूज ऑफ हाई, जिन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. सो अगेन इट enables the management to use managerial skills effectively. Next is employee development. Since delegation of authority and responsibility increases the employee morale, इससे employees का जो morale था वो बढ़ गया, उनको opportunities मिली to use their potential, to develop their skills, to develop the ability to handle complex situations. So it not only strengthens the employees career prospects but also prepares them for as future leaders and decision makers. So employees की development तो हो ही रही है. Next is motivation of employees. Why motivation? Since it indicates superior's confidence and trust on the subordinates. तो कहीं ना कहीं जो सबॉर्डिनेट है वो मोटिवेट हो रहा है, बिकॉज जो सुपीरियर है उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, ही इज़ ट्रस्टिंग द सबॉर्डिनेट, दैट्स वाई ही इज़ असाइनिंग हिम some responsibility along with the authority. So it builds self-esteem among the employees, among the subordinates. It improves the confidence and motivates the subordinate to prove himself or herself. Subordinates also feel committed and work hard. He worked hard to achieve the high productivity so that he can again get the trust of his superior. Next is facilitation of growth. So since it helps the employees to train the in-house workforce. बाहर से लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं हम उनको ही ट्रेन करेंगे फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स, फॉर द न्यू वेंचर्स. ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ द ऑलरेडी ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट्स. और जब भी कंपनी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, वहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ को यूज़ किया जा सकता है जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं. बाहर से किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने की कंपनी को ज़रूरत ही नहीं है. सो ऑटोमेटिकली द एम्प्लॉयज़ दे आर गेटिंग facilitated and the organization that is also getting growth. Next is basis of management hierarchy. Since the authority flows downwards from the superior to subordinate, establishing the relationship between the superior and the subordinate. The degree and the flow of authority determines the reporting system. इससे क्या होगा, हमें रिपोर्टिंग सिस्टम का पता चल गया कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किसके पास कितनी पावर्स हैं. सो दैट्स व्हाई डेलीगेशन इज कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. फॉर एग्जाम्पल, Mr. A gives authority to Mr. B to visit customers and give presentation. It is clear that Mr. A is the superior and Mr. B is the subordinate. So it is the basis of management hierarchy. Last is better coordination. Since all the three elements of this delegation, they determine the powers, duties and answerability of each and every employee working in the organization. So it brings the clarity of work to be done and avoids all the duplication of work. डुप्लीकेशन नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है. सो क्लैरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, किसको क्या काम करना है. हर जगह जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल क्लियर है. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ क्लियर, अथॉरिटी इज़ क्लियर. सो ऑटोमेटिकली इट रिजल्ट्स इन बेटर coordination among employees working in all the departments and working at all levels of the management. So I hope this video of authority of delegation is clear. Thank you so much.
one more thing, there is certain difference. Sometimes it has been asked in the question, what's the difference between authority, accountability, and responsibility? So this flowchart will help you to have the idea about the difference between these three elements. Thank you.